have the august presence of eminent dignitaries, policymakers, and practitioners, researchers, academicians, representatives from civil society, grassroots innovators, partners, and change makers from the tribal community. May I now request Professor T.G. Sitharam, Director, IIT Guwahati, to kindly felicitate the Honorable Chief Guest, Honorable Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Mundaji. Thank you, sir. May I now request Professor T.G. Sitharam to felicitate the other dignitaries on the dais. Dr. Debapriya Datta, Head, SEED Division, DST, Ms. Kimnei Changsen, Director, ASTEC, Dr. Ashish Kumar Mukherjee, Director, IASST, and Dr. Arun Kumar Sharma, Director, NECTAR. Thank you, sir. May I now request Ms. Kimnei Changsen, Director, ASTEC, to felicitate Professor T.G. Sitharam, Director, IIT Guwahati. Thank you, ma'am. You all are aware that this conclave is being organized on the eve of Janjatiya Gaurav Divas, celebrated on 15th November to remember the exemplary contributions made by Bhagwan Birsa Munda for India's independence. To mark our patriotism and loyalty to the country, may I now request the dignitaries on the dais and all the participants
to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Tamaso ma jyotirgamaya. May the light of knowledge remove the darkness of ignorance. भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ हम भगवान का नाम लेकर और पवित्र दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया पवित्र दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने की कृपा करें। Ladies and gentlemen, now we will play a video on glimpses of science and technology empowerment of tribal communities through various initiatives of the Department of Science and Technology, Government of India. विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र के विकास के साथ साथ देश में सामाजिक समानता और समावेश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी पहल पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर की गई थी। ये मौका है इस पर पुनर्विचार करने का कि जनजातीय समुदाय के जनजीवन को बेहतर बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है। ये मौका है पीछे मुड़कर देखने का कि आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के सफर में हम कहां तक पहुंचे हैं। ये मौका है विचार करने का कि आगे अभी और क्या करने की जरूरत है। जनजातीय कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर व्यापक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से देश भर में जनजातीय समुदायों की कल्याण प्रणाली को मजबूत करने में सहायक रहा है। इससे जनजातीय समुदायों को बहुत लाभ हुआ है और जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिली है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं को विशेष रूप से आदिवासी समुदायों की जरूरत के अनुरूप तैयार किया गया है, जैसे
इंस्पायर मानक पुरस्कारों के माध्यम से अनुसूचित जनजातीय स्कूली बच्चों की नवाचार क्षमता को प्रोत्साहित किया गया। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में उनके अनुसंधान एवं विकास के हित को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन दिया गया। इंस्पायर कार्यक्रम द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों और विद्वानों को फेलोशिप प्रदान की गई। देश के विभिन्न हिस्सों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हब उपयुक्त S&T हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय समुदायों की आजीविका प्रणाली के समग्र विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की जरूरत वाले सामाजिक मुद्दों की पहचान की जा सके। अंत्योदय की सोच के साथ DST ये सुनिश्चित करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ लोगों तक इस तरह पहुंचे कि वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े और सकारात्मक परिवर्तनों को अपनाने के लिए इच्छुक हों। इसके लिए विभिन्न संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर स्थानीय भाषाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रणाली को विकसित किया गया है। इसी कड़ी में 11 और 12 नवंबर 2022 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा IIT गुवाहाटी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन उन सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनके द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से DST ने आदिवासी लोगों के जनजीवन को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सम्मेलन में विज्ञान संचारक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद, अधिकारी, छात्र और आदिवासी समुदाय के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो एक मंच पर अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करेंगे और एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे। Thank you. To welcome is to show honor and to establish integrity. May I now heartily invite Professor T.G. Sitharam, Director, IIT Guwahati, to grace the dais and deliver his welcome address. Hello. Namaskar. Very good afternoon to all of you. And also I welcome all of you to the Janjatiya Gaurav Divas celebrations at IIT Guwahati. Honorable Sri Arjun Mundaji, Union Minister of Tribal Affairs. And also we have Honorable Dr. Jitendra Singh Ji, Union Minister of Science, Minister of State for Science and Technology, and also Union Minister of State for Earth Sciences. He is online. He is also holding other positions, Union Minister of State in Prime Minister's Office, Ministry of Personnel, Pensions, Public Grievance, and DOAE, Department of Space, and also the Vice President of CSIR. We have on the dais Dr. Arun Kumar Sharma, DG Nectar, Dr. Ashish Mukherjee, Director IISST, which is a DST institution, and Dr. Debapriya Datta, representing Department of Science and Technology. And also we have Dr. Kiminai Changsan, Director Aztec, and all the distinguished guests of the dais and also online, the Vice Chancellors of various universities, organizing committee members and officials of Aztec, IISST, Nectar, Vigyan Prasar, DST, MTA, participants from universities, colleges, schools, including students, and also the exhibitors who have come
from far off places to display their products, and my dear student community of IIT Guwahati. It gives me a great pleasure to welcome you all to this two-day national conclave on science and technology empowerment of tribal community, which is being held at IIT Guwahati. We are very proud to be part of this event. And once again, warm welcome to a very beautiful campus of Indian Institute of Technology Guwahati, which is sitting on the banks of mighty Brahmaputra river. Also, on behalf of all the organizing institute like Aztec, IISST, Nectar, and MTA, and also DST, I am thankful to all of them for choosing Assam as their destination venue for this hosting this conclave. This region is truly diverse with multi-ethnic groups residing in harmony with each other since centuries. And we all are about to witness this rich cultural diversity over the next 2 days. IIT Guwahati, being a technological institute and the only IIT among the 8 northeastern states, I am very glad that the theme of the conclave, Science and Technology Empowerment of Tribal Community, very well aligns with our mission to provide technological solutions for challenges faced by this diverse population of this region. IITs, which started in 1960s as elite engineering colleges, are today proud, and I would like to submit to the Honorable Minister to say that these institutes of Indian Institute of Technology have become institutes of Indian technologies. Sir, as a larger part of various initiatives and the big vision of Honorable Prime Minister of India for Jal Vigyan, Jai Anusandhan, Jai Vigyan, we are working towards making a social impact through technological intervention, providing developmental solutions in niche areas, and enhancing life quality through various activities at our departments, schools, and centers. As per the NEP 2020, we have expanded. IIT Guwahati has expanded beyond the technological sections or schools, centers, or departments into medical science, and also School of Business is also been started, School of Agro and Rural Technology, and School of Data Science and Artificial Intelligence, and the list goes on. Faculty members at the Center for Linguistic Science and Technology at IIT Guwahati have been actively working towards the preservation and promotion of indigenous languages of India. Many of the languages that Center for Linguistic Science and Technology at IIT Guwahati focuses on are Northeast Indian languages presently, but not limited to those only, which are mostly the indigenous tribal languages spoken in this region that include O, Angami, Bodo, Dimasa, Garo, Mizo, Mog, Rabha, and Thiwa, to name a few. The scholars in the centers are not only involved in in-depth analysis of these languages spoken in Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura, and other northeastern states, but they are also involved in developing technologies such as language and dialect identification systems, speech recognition systems, text-to-speech systems, etc. These language technologies will make sure that the tribal languages of this region and other indigenous population, which even lack a proper script of their own, are preserved for the upcoming generations and not left behind in the race towards our AI-enabled future. Another new academic center at IIT Guwahati, that is Center for Indian Knowledge Systems, that was set up at IIT Guwahati on the advice of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, which is trying to document scientific and artistic practices of various tribes of Assam. In the month of March 2022, a day-long exhibition of artisans of Assam was organized. This center is soon planning to undertake research in the tribal areas of Arunachal Pradesh, and also looking to extend to the other regions. Apart from the historical and cultural studies, the center will carry out in-depth study on the herbal medicines used by the various tribes and to preserve this unique traditional knowledge of invaluable proportions. Similarly, few research groups at this center are also studying traditional grain storage system of Arunachal Pradesh.
Further, as part of the various outreach activities, IIT Guwahati is also involved in supporting the Super 50 mission of Bodoland Territorial Council for enabling the tribal students to get admission in premier engineering institutes of India. Super 50 mission has been initiated by Honorable Chief of Bodo Territorial Region, Sri Pramod Boroji, and we look forward to provide all kinds of support to their efforts. The School of Agro and Rural Technology has also been working on developing mechanical tools and equipments encompassing modern yet inexpensive technology to aid their livelihoods in multiple sectors. These include the implementation of patented technology and mechanized production of plain Muga fabric in joint collaboration of Rootag, Northeast and Nedfi. The latest success is the high load carrying capacity improvised bicycle feed block making machine, which was adopted by National Research Center on Yak, ICAR, Dirang, Arunachal Pradesh, and 5 machines were distributed among yak farmers. Besides this, the National Research Center on Mithun, Aikar, Dimapur, Nagaland also implemented the same technology for Mithun. As an institute with global recognition in academic and research, today IIT Guwahati is ranking number 37 in the world and number 2 in India in the citation per faculty. I just would like to tell you, this citation per faculty is the only quantifiable parameter in the QS World Ranking 2023. IIT Guwahati stands second next to Indian Institute of Science, Bangalore. We are very, very proud for the contribution of the faculty and research scholars of the Indian Institute of Technology, Guwahati. And this is not just this year, even the previous years also we are doing very well in this ranking. IIT Guwahati has been making tremendous efforts to reach out to every corner of this region, and with major schemes related to education, technology development, entrepreneurship, startups, imparting skill training and development. I think that this conclave being held here is the first time in the history of the country that on such a large scale efforts to empower the tribal community through science and technology is being showcased to empower the people. As part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, we believe that inclusive growth of the entire population of the country will help us to move forward and move faster and inculcating science and technology in the best way. Before I end, I would also like to mention about what we can learn from the tribal community, and which I feel being advertised and is being widely propagated to be implemented on a global scale. I am taking about 17 sustainable development goals that the United Nations has made as an urgent call for action by all countries as part of the global partnership. The tribal community has been living a peaceful life in harmony with nature and preserving it in a sustainable manner over centuries. And we all can see that 17 sustainable development goals, many of them suggest for the promotion of peaceful and inclusive societies for sustainable development. Reduce inequality, sustainable use of natural resources of all forms. Thus, it is very necessary to also look up to the existing knowledge and practices of these communities and preserve them and learn from them. Lastly, I would like to mention that the major contribution of the tribal community to the freedom movement and nation building in the last 75 years of our Azadi Ka Amrit Mahotsav time, it is very tremendous, and we all have so much to learn from them and lead a life the sustainable way, using natural resources to the minimum and conserve, preserve and restore the natural way of living in harmony. At IIT Guwahati, we have introduced Sustainable Development Goals, a compulsory course for all our undergraduate BTech students in the second year, so that they are aware of what is happening. In addition to that, I would like to also say to Honorable Minister, sir, the ST students at IIT Guwahati touches close to about 700 out of 8,000 students. And we have recently in the JEE Advance admitted 72 students belonging to ST category have been admitted out of 1,200 and odd students at IIT Guwahati. IIT Guwahati is committed to take forward the multidisciplinary and inclusive approach of education and technology development to the masses so that the challenges faced by the indigenous communities are met in a timely manner. This conclave will definitely provide a huge platform to deliberate on the upcoming challenges to the tribal community, and I am hopeful that this event will help bring all the stakeholders on one platform and work to provide technological solutions to some of the major and important challenges.
with these few words, I once again welcome all of you to this conclave. Jai Hind. Thanks a lot, sir, for addressing the participants with your welcome speech. Ladies and gentlemen, you are all aware that this conclave is to celebrate the empowerment of tribal life and livelihood through various initiatives of the Department of Science and Technology. May I now invite Dr. Debapriya Datta, Head, Science for Equity, Empowerment and Development Division, Department of Science and Technology, our continuous source of inspiration, to organize this event, to present a brief on the conclave through his opening remarks. Good afternoon. Namaskar, Johar, Sabhi ko. At the outset, I would like to thank Honorable Union Minister for Tribal Affairs, Shri Arjun Mundaji, for his gracious presence, and our beloved and Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh Ji, the Minister of Science and Technology and Earth Science, for his virtual presence for inaugurating the first National Conclave on Science and Technology Empowerment of Tribal Community. Now, why we thought of it? You may be aware about that the Department of Science and Technology is the only scientific department in the country which has a mandate to work for the development of the tribal community, and we are doing so since 1990 through the various programs and the schemes, as you have already seen in the video. Now, in order to celebrate the National Tribal Day on the occasions of the Punya Tithi of Bhagwan Birsa Munda, we thought of organizing this first national conclave to showcase the outputs and the outcomes of these various programs of the Department of Science and Technology. Also, the livelihood strengthening through the knowledge system means it's a two-way flow of the knowledge. The flow between the knowledge institutions and the community. Thus, a large part of this conclave consists of the feedback from and showcasing the tribal community's knowledge. And also we have attempted to bring these discussions on the science and technology empowerment out of the four wall of the classroom to the open ground of exhibitions in the chapel. We hope that this first attempt and the effort, you will find this experience exciting, useful, encouraging, and will make many of the collaborations opportunities for these 2 days to strengthen this two-way knowledge flow, and will take this dialogue of the S&T strengthening, the knowledge strengthening for the welfare of the tribal community. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing the details about this conclave and its significance. Our Honorable Union Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh Ji, couldn't make it today due to a scheduling conflict. However, he has taken time out of his busy program to deliver the inaugural address in this conclave virtually. As you all know, the Department of Science and Technology, under his dynamic leadership, has taken several steps for STI system strengthening of tribal communities across the country by the way of various specially tailored science and technology schemes and programs. May I now request the Honorable Minister to give his inaugural address. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, हम सबके आदरणीय परम आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, डायरेक्टर IIT डॉक्टर सीतारमन, माय कोलीग फ्रॉम DST डॉक्टर दत्ता, members of the fraternity, representatives of the state government of Assam, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मुझे क्षमा याचना करनी है,
योजना तो ये थी कि मैं स्वयं वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहता और माननीय अर्जुन मुंडा जी का स्वागत करता जब वो समारोह में पधारते, परंतु ऐसा ना हो पाया बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग एंड इन स्पाइट ऑफ द टाइमिंग बीइंग 1 o'clock आई एम नॉट एबल टू मेक इट, सो आई हैव टू गेट कनेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। माननीय अर्जुन मुंडा जी हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और सीनियर भी हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं से माफी मांग करके आगे की बात शुरू करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का एक निर्णय लिया था और साथ ही साथ इसका यह भी महत्व है कि उस समय उसी दिन हमारे महान स्वतंत्र संग्रामी श्री बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी रहता है, जिन्हें इस समुदाय के बहुत सारे लोग और कुछ एक हिस्सों में भगवान के रूप में पूजा भी जाता है। और पिछले वर्ष जब यह समारोह बनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी अगुवाई की और देश भर में अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। और मैं प्रशंसा करना चाहता हूं और बधाई के पात्र हैं माननीय अर्जुन मुंडा जी, जिनके नेतृत्व में इस मंत्रालय ने हम सबको भिन्न भिन्न कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है, सहयोग भी दिया और भिन्न भिन्न प्रकार की नई योजनाएं एवं आइडियाज भी दिए। भले ही जनजाति समाज की चिंता करना, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक और उनके शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी सारी की सारी सरकार की रहती है, परंतु हमारे स्तर पर भी, विचार एवं प्रौद्योगिकीकरण विभाग के स्तर पर भी इस प्रकार का विचार आया कि जहां तक हो सके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से जिस प्रकार से भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातियों के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं या नई योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, फॉर विच डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल। और साथ ही साथ जब अगले 25 वर्ष हम अमृत काल की बात करते हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि उस अमृत काल से निकल करके जब भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा, तो तभी संभव है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त भूमिका अपनी अदा करने का अवसर मिले, उसमें उस तरह की क्षमता हो, उसमें कैपेसिटी पैदा की जाए और निश्चय ही उसमें जनजाति समुदाय का भी प्रत्येक सदस्य शामिल रहेगा। इसी विचार को लेकर के पहले मैं आपके समक्ष कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव रखना चाहूंगा जो हाल ही के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से प्रारंभ किए गए हैं। लगभग 700 ऐसे छात्र हैं शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के, जिनको फेलोशिप दी गई फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू परस्यू अ करियर थ्रू इंस्पायर फेलोशिप्स। इसके अतिरिक्त हमारे यहां इंस्पायर मानिक अवार्ड रहता है, जिसके तहत 12,500 जनजातीय छात्रों को ओरिजिनल आइडियाज देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। सिमिलरली, मोर देन 200 साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब community were offered financial support for implementing projects in the frontier areas of science and engineering under the scheme Empowerment of Equity Opportunities for Excellence in Science, thus creating an opportunity in the national science and technology development process. इसी प्रकार, while science is universal, टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल फॉर लोकल सॉल्यूशंस। हमारा ये मानना है, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर इंडियन प्रॉब्लम्स एंड इंडियन नाइज्ड टेक्नोलॉजी और इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी, एज वाज बीइंग मेंशन्ड बाय डायरेक्टर IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुड आल्सो बी
Institute of Indian Technology. And that also in a way gets connected with Prime Minister what has been reiterating as vocal for local. So while not keeping ourselves unaware of the latest technologies happening in the world, also trying to improvise, modify, develop technologies which are particularly specific to our conditions, we have tried to target every section of society, including the scheduled tribes. And therefore about 100 new projects were supported during the last 3 years in diverse technology areas, and these projects are expected to benefit more than 50,000 population from the scheduled tribe community. The department had established 10 science and technology innovation hubs. This is a unique initiative of its kind. पहली बार मुझे लगता है कि 75 वर्ष भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने इस प्रकार की कल्पना की, एक्सक्लूसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इस तरह के 15 हब्स, क्योंकि ये 10 हब्स पहले से स्थापित हो चुके हैं और 15 शीघ्र ही होने वाले हैं. But since we are now holding this program in the city of Guwahati, the gateway to Northeast, so it gives me pleasure to mention over here कि नॉर्थ ईस्ट में इन 10 शेड्यूल्ड ट्राइब इनोवेशन हब्स में से 4 पूर्वोत्तर में स्थापित है, which means 1 each in Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Tripura. And in fact जब ये पहली बार ये समारोह करने का विचार आया तो मैंने ये बात आगे रखी थी विनम्रता से बड़ा निवेदन रख के कि चूंकि ये समारोह ट्राइब्स के साथ जुड़ा है और विज्ञान के साथ जुड़ा है, तो क्यों ना हम इसे गुवाहाटी में आयोजित करें जहां ट्राइबल पॉपुलेशन की भी बहुत भारी संख्या है और टेक्नोलॉजी की दृष्टि में भी तो भारत के कुछ एक अन्य संस्थानों से काफी अग्रसर है. इस प्रकार 4 out of 10 scheduled tribe innovation hubs have been set up already in Northeast, and in addition at Guwahati we have the Heritage Food and Beverage Research Center for research on ethnic foods of tribals of Northeast and scheduled tribe community center of bioresources for innovation, technology and entrepreneurship, which has already been established in the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, at a cost of rupees 12 crore. The Department of Science and Technology has also supported a rupees 50 crore R&D project to develop a permanent cure for sickle cell disease with extensive benefits of improving the standards of life of the sickle cell disease patients using gene editing technologies. जब हमारे ध्यान में लाया गया कि कुछ एक समुदाय के ऐसे वर्ग हैं where this disease is more prevalent compared to others, we thought it was a befitting service to this community. And at the same time, I'm happy to declare that the Department of Science and Technology, I think that also is a new announcement and a declaration this morning. We are launching a special program from today for accelerated development of particularly vulnerable tribal groups as a commemoration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So accelerated, that means fast track development, that means vikas of particularly vulnerable tribal groups. यानी ट्राइबल समुदाय में भी वो लोग जो तुलनात्मक ढंग से अपने ही समुदाय से, अपने पीयर्स और अपने काउंटर पार्ट से कुछ अधिक मात्रा में पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर विशेष तवज्जो, विशेष प्राथमिकता दे करके ऐसा संभव हो सके. I am glad to see that the theme of the conclave which is being organized today is the science and technology empowerment of tribal empowerment and community, echoing the thoughts of the Honorable Prime Minister, Jaya Vigyan, Jaya Anusandhan. And this is the first time in the country on such a large scale the contribution of Department of Science and Technology is being made for the strengthening of the empowerment of tribal community. And we must realize that when we talk of empowerment of the weaker sections of society, whichever weaker section it might be, today of course we are dealing with the tribal community, our
primary armamentarium, the primary means is going to be technology, science, and that is going to last for the next quarter of a century. So this is also in keeping with the tone and the mood of the times that we are living in, that we have chosen to have this focus. At the same time, मुझे धन्यवाद करना है आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का, उनके मंत्रालय का और उन सभी संस्थाओं का, the organizations of the department and the STEC for being a part of this conclave. I'm sure the conclave will display various initiatives of the Department of Science and Technology through technical sessions and institutional capacity building and human capacity building at the community and individual levels, technology strengthening of various livelihood systems, science and technology strengthening for tribal welfare and science, and I'm sure there will also be roundtable discussions, I believe, and I'm sure that the conclave will bring out strategies, recommendations for strengthening our initiatives further. आज हमारा ये पहला अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सामूहिक तौर पर जब हम विचार करेंगे तो इससे जो मूल मंत्र और निष्कर्ष निकलेंगे, they will make us wiser to carry forward this program in future also. Last but not the least, I remember with honor the contribution of the tribals to the freedom movement, which I started my address referring to, and I think this is not only a tribute through science and technology to the tribal community, but also to all those freedom fighters from this section of society who made it possible for us to live in an India which has been independent for the last 75 years. And in the times to come, we will look forward to a more integrated program. This program also has been organized with the integration of a number of agencies, but we will also try to involve the private sector, the industry, so that the tribal community is a part of the mainstream journey of India led by Prime Minister Modi for the next 25 years. And we will also try to give a special focus to those members of the tribal community who happen to be in the age group of 30s, because they are the ones who have the opportunity, energy to contribute to the making of Century India. और हम सबका ये प्रयास रहेगा कि हम उनकी क्षमता का विकास करने में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में एक सकारात्मक योगदान कर सके. एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir, for your outstanding inaugural address. The Ministry of Tribal Affairs functions as the umbrella unit for the overall development and well-being of the scheduled tribe communities under the able and visionary leadership of Shri Arjun Munda ji, Honorable Minister of Tribal Affairs. As we all know, he's been a champion of masses and known for accelerating the growth of ST community in the country through countless new initiatives. He has always been vocal about the usage of science and technology for empowering lives, just as our theme for this conclave. On behalf of one and all present here, let me please extend a welcome to you, sir. It's now a privilege to request our Honorable Minister to deliver the keynote address. National Conclave on Science and Technology, Empowerment of Tribal Community. First of all, I thanks Dr. Jitendra Singh, Ministry of Science and Technology and Earth Science, and
Director IIT Guwahati, Professor T.G. Sitharaman, Dr. Debapriya Datta, Advisor in Science and Technology, and especially all the audience, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm really glad to be here as a Department of Science and Technology has organized the tribal workshop for the welfare of the tribal communities. The Government of India, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, is giving attention to the integrated development of tribal communities while keeping their identity alive. Our colleague and Senior Minister Dr. Jitendra Singh has said all the initiatives which we are taken up. Let me first I introduce myself. मैं देश के उस मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं जहां भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया। मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नेतृत्व करता हूं जहां की सुगंध को फैलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गौरव दिवस की घोषणा की कि देश के समस्त जनजातीय समाज को और देशवासियों को, हम सबको ऐसे जंगलों के बीच से उभरे हुए आज़ादी के लड़ाई को नेतृत्व करने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म और उस दिन को हम सब एज ए स्वाभिमान दिवस, एज ए गौरव दिवस सब मनाएं। और उसी उपलक्ष्य में आज हम एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इसके लिए IIT गुवाहाटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने अपनी यात्रा संघर्ष के साथ प्रारंभ किया और जनता के प्रेम ने मुझे सबसे कम आयु का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्रदान किया और आज तक के, अभी तक के जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक किसी ने हमारा जो रिकॉर्ड है उसको नहीं तोड़ा है। तो ये जनता का प्रेम, संघर्ष का परिणाम और देश के उस मिट्टी का सुगंध का एक उदाहरण है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है और हमें इस लोकतांत्रिक राष्ट्र पर गर्व है जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और आज जो ये पहली बार
This is the first time this kind of program organized by Ministry of Science and Technology and Ministry of Tribal Affairs and the IIT Guwahati. और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य है जिसकी चर्चा आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया कि हम आगे लक्ष्य देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ कि 2047 में इंडिया विल लीड द वर्ल्ड। इंडिया की जो संभावना है उसको हम इस तरीके से उभारेंगे कि दुनिया का नेतृत्व करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। यह हमारी ताकत, और उस ताकत को सही ढंग से पहचानने के लिए हमारी चुनौतियों का आकलन हम कैसे करते हैं, दिस इज द चैलेंज बिफोर अस। यह हमारी चुनौती, और उस चुनौती में एक बड़ा कार्य क्षेत्र है जिसको आज हम एज ए कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी नहीं, ट्राइबल करेक्टर, जिन्होंने अपने को भूला नहीं वो जनजातीय समाज है। यह अलग बात है कि हमारी समस्याएं, हमारी आवश्यकताएं और हमारी भविष्य का लक्ष्य उस ढंग से निर्धारित करने में या समझने में हमने बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया। और ये देश के साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि हमारे साथ। यहां आने के पहले, बिफोर आई केम टू द स्टेज, आई वॉज डिस्कस विद द डायरेक्टर IIT गुवाहाटी। मैंने कहा कि ये IIT का जो कॉन्सेप्ट इस देश में प्रारंभ हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कभी हमने यह आकलन किया है इन सारी बातों का? कि IIT बनने के बाद IIT से निकले हुए लोगों का माइग्रेशन परसेंटेज क्या है? हमें उपलब्धि पर गर्व है। एज ए पेरेंट हर किसी को गर्व होता है, हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, हमारे बच्चे यूरोप में, हमारे बच्चे जापान में हैं, हमारे बच्चे बहुत जगह में, दुनिया में हैं। क्या हमने यह आकलन किया कि हमारे बच्चे, यानी हमारे बच्चे मतलब इस पीढ़ी के नहीं, जब से IIT खुला है तब से गए, उसका परसेंटेज क्या था? डोमेस्टिकली हम अपने माइंड को कितना यूज पर कर पाए इस देश के लिए। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मुझे कलकत्ता में IIT एलुमनाइज का एक प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो उस समय के जो IIT एलुमनाइज के जो प्रेसिडेंट थे वो हमसे मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी मैं वहां जाऊं, लेकिन मुझे कुछ प्रश्न है आपके पे, और मुझे वो प्रश्न का उत्तर आप देंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो उन्होंने कहा कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने IITians हैं वो सारे पहुंच रहे हैं और आपको आना है।
तो मैंने एक ही विषय पूछा कि मुझे ये समराइज करके थोड़ा सा सारांश दीजिए कि जो आईआईटी से निकलने के बाद दुनिया भर में पहुंचे, उनकी उपलब्धि हुई, देश गर्व करता है, देश गर्व करता है, हम सभी गर्व करते हैं, पर उन लोगों के माध्यम से देश को क्या मिला, ये मुझे थोड़ा आकलन करके बताइए। ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद यदि पहली बार कोई प्रारंभ हुआ है तो वो डायनामिक लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कि हमें अपने को समझ करके मेक इन इंडिया के साथ अपना यात्रा प्रारंभ करना पड़ेगा। हमारी सहयोगिता, सहभागिता, समावेशिता दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, यह अच्छी बात है, पर दुनिया के लिए एक चिड़िया से आप सीखिए, एक चिड़िया को देखिए। जब आप ट्राइबल की बात करते हैं तो एक चिड़िया को देखिए कि चिड़िया जब घोंसले में अपने बच्चे को देखते हैं, उड़ान भरती है, इतनी ऊंचाई तक जाती है, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए उसके लिए भोजन लेके आती है। हमारे देश में, हमारी सोच में हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना 2022 से लेकर 2047 तक इसी लक्ष्य के साथ हमें सबको जोड़ करके काम करना है। और उसमें ट्राइबल को, यहां जितने इनिशिएटिव है, lot of points are here which we are taken up, we are taking action, हम सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच और माइंडसेट यदि इस लेवल में नहीं आएगी तो शरीर और आत्मा का जो समावेश है वो हमेशा अलग अलग होगा। मैं एक जनजातीय समाज से हूं और ट्राइबल के बारे में जब हम सोचते हैं, ट्राइबल इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करता है, लेकिन उसकी इनोवेशन का रिकॉग्निशन नहीं है। जर्मिनेशन इकोनॉमी में, आज हम इकोनॉमी के भाग दौड़ में हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी में वो हमेशा इनोवेशन के साथ काम करता है। आज यदि आप आग देख रहे हैं तो हम तो बारूद ढूंढ करके आग ढूंढते हैं, लेकिन वो लकड़ी को घस करके आग बना करके वो अपना घर संसार और पूरा उजाला फैलाता है। मैं बचपन में क्या हूं, आप अभी भी मेरे से करा लीजिए, 2 लकड़ी से आग कैसे निकलती है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूं कि कितना घर्षण की शक्ति है। दुनिया का जो आविष्कार है वो घर्षण है, और उसके बुनियाद में अगर आप जाएंगे तो एक आदिवासी एथनिक दिखाई देगा। इस तरह के कई चीजें, खेती बाड़ी के जितने औजार है, आप कह सकते हैं कई चीजें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ट्राइबल कभी प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं करता है, वो अपने काम करने के लिए करता है। तो इन सारे चीजों के बारे में यदि हम अच्छे ढंग से देखें कि इनोवेशन हर जगह है, जैसे ट्राइबल हेल्थ एंड ट्राइबल जो टेक्निक है या ट्राइबल के जो चिकित्सा पद्धति है, आज नाम के दृष्टि से कई तरह से आप लैब में ले जा करके किसमें क्या कंटेंट है इसकी जांच करते हैं, लेकिन जो आदिकाल से जंगलों में रहने वाला है वो किसी लैब में नहीं गया, कहीं पर परीक्षण नहीं किया,
लेकिन आप जितने बातों को साइंटिफिक तरीके से करेंगे, उससे ज़्यादा उस पौधे के बारे में एक ट्राइबल आपको बता देगा कि सतही तौर में इसमें क्या गुणवत्ता है। लेकिन उसके नजरिए के साथ, उसके सोच के साथ हम अपने आप को जोड़ नहीं पाए, क्योंकि हम एजुकेशन को पलायनवादी बनाए। और हम गर्व करते हैं कि हमारे बच्चे यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अब समय आया है कि जब हम इन सारी चीजों को अच्छे ढंग से देख सके, अच्छे ढंग से कर सके और अच्छे ढंग से उसका परिणाम को सुनिश्चित कर सके। मुझे खुशी है कि आज यहां हम सब चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम उसके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे करें। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। जब हम छोटे थे तो बहुत सारे मोटरसाइकिल, लूना में कोई चढ़ा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लमरेटा में कोई चढ़ा है कि नहीं, बजाज तो बहुत बिकती थी, एसडी, राजदूत, ये सारी चीजें क्यों बंद हो गई? क्योंकि फर्दर इनोवेशन का जो हमारा रिसर्च बेस्ड चीजें होनी चाहिए, उसको हमने ध्यान नहीं दिया। हम उन सारे चीजों को आगे बढ़ावा नहीं दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने इन बातों का उतना महत्व नहीं दिया जितना इनिशियली। जो ये सारी चीजें आईआईटी के प्रोडक्ट है, एनआईटी या आरआईटी के प्रोडक्ट। जितनी चीजें नए नए इंजीनियर्स निकले, नए तरीके से हमें करना है, देश के लिए कर रहे, ठीक है, उनके इनकम के लिए भी जरूरी था, वो अपने माइंड का मैक्सिमम, लेकिन उसको हम आगे बढ़ा नहीं सके। आज जब हम दोबारा से वैसे गाड़ियों को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है, नया मॉडल, अभी एसडी का नया मॉडल आ गया है, इनफील्ड का नया मॉडल आ गया है, ऐसे कई गाड़ियों का नया नया मॉडल आ गया। हमने कोलैबोरेशन में एक पूरा मार्केट ले लिया, हीरो होंडा, कोलैबोरेशन जापान के साथ किया। आज ठीक है, होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया। तो लेकिन कहने का ये मतलब है कि हम सब अपनी चीजों को समझने का ज्यादा प्रयत्न करें। ईमानदारी के साथ हम अपने मेन पावर को, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हम हैं और उसमें 10.5 करोड़ ट्राइबल एक बड़ी शक्ति है। इसको जोड़ करके जब हम आईआईटी जैसे संस्थानों में कॉन्क्लेव के माध्यम से चर्चा करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें उभर करके आती है। हमारी शक्ति न केवल खुद की शक्ति है, बल्कि हमारी शक्ति प्राकृतिक शक्ति है। हमारी शक्ति जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को बताया, ठीक है, हम बहुत सारे लोग बहुत तरीके से, लेकिन एक पद्धति, योग की पद्धति, जीवन को सरस बनाने की पद्धति, शरीर के दृष्टि से ही स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ होना जरूरी है। और शारीरिक और मानसिक का समावेश किसी पद्धति में है तो भारत ने विश्व को फिर से नया दर्शन दिया, वो है योगा में, योग में है, वो भारत की पद्धति। लेकिन इसको हम दुनिया में पहुंचाने में बहुत देर लगाते हैं। इसी तरीके से हमारे सामने ट्राइबल के साथ मिल करके ये जो इनिशिएटिव है, हम उसको सक्सेस करें, कैसे करें, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमें आने वाले दिनों में इन चुनौतियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐतिहासिक दृष्टि से, या ये कहें वी आर ऑल नोज कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल है इंडियन हिस्ट्री में,
पिछला इतिहास को अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में हमारे लीजेंड लाइक ब्रह्ममिहिरा, आर्यभट्ट, भास्करा, to scientific architecture like a Jantar Mantar built by Maharaja Jai Singh II, to mathematicians like Bodhiana who calculated the value of pi. Now with the fourth industrial revolutions and emergence of technologies like internet and things, science and technology has become an inalienable part of our lives. With the emergence of the DST in 1971, it has not only promoted the directive principle of in calculating scientific temper in youth, but also continuously emphasizing on the innovative solutions for social problem of our nation. The prime example being development of tribal communities via science and technology and innovation helps to promote scientific talent and uplift the socio-economic status of these communities. I am very happy DST is spearheading around such 75 science and technology and innovation hubs in different parts of the country, which will directly benefit our लगभग 30,000 से अधिक SC/ST बच्चों को इसमें लाभ मिलेगा और टारगेटिंग कि फार्म और नॉन फार्म इलाके में लाइवलीहुड सेक्टर में सारे लोगों को सुविधा कैसे मिले। Department of Science and Technology has also given a call for proposal which belongs to my department, which are working on that tribal sub-plan. Techno intervention of tribal and special call, which is mentioned by Dr. Jitendra Singh, PBTG, which will help the most vulnerable community in tribal areas. The seat division of DST has supported around 500 S&T projects under the TSP in diverse area of agriculture, resource management, micro enterprises development, amongst others. With the basic right of, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट, हर आदमी एक बार पैदा हुआ, वन टाइम लाइफ, इट्स अ वन टाइम लाइफ, नोबडी कैन, मतलब ये नहीं कह सकता है कि मैं दोबारा पैदा होऊंगा तब वो करूंगा, इट्स माई वन लाइफ। और वो भी if you calculate the life, that's below than 30,000 days. 30,000 दिन से कम की आयु, उसमें भी काम करने की बात अगर देखें 30,000 दिन में 15,000 तो रातें गुजर जाती है, 6,000 दिन तो 18 ईयर्स तक में ही बीत जाता है। तो हमारे सामने we are very little time. How to get back to the society, that's more important. तो उस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे सामने ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम अपने समय का उपयोग किस तरीके से, और मैं इस मामले में आई एम फॉर्चुनेट एज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, द डायनामिक लीडरशिप, dynamic leader our beloved Prime Minister नरेंद्र भाई मोदी। मुझे खुशी है और हम सब काम कर रहे हैं, और मुझे इस मिनिस्ट्री में बहुत
बहुत सारी चीजें, और मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या इस समय का उपयोग और अधिक कैसे कर सकते हैं। इस देश की संभावनाओं को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए जो हमें मौका मिला है, यह हम सब के लिए। और मैं खास करके जो मुझे बताया गया है, लॉट ऑफ ट्राइबल डेलीगेट्स आर देयर इन ऑडियंस, बहुत सारे लोग आए हैं। आप सब के लिए मैं यही कहूंगा, और हम खुद को भी कहेंगे ये बात कि आइए मिल करके, अपना जीवन बिताने का लक्ष्य तो हर व्यक्ति का होता है, देश का भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अगर जीवन बिताएंगे तो हमें दुगुना खुशी होगी कि हम जिए तो न केवल अपने लिए जिए, हम इस देश के लिए जिए। जिस चीज को भगवान बिरसा मुंडा ने बेसिक साइंस को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, बेसिक साइंस है उसमें, जल जंगल जमीन है, जब बहुत बड़ा साइंस है इसमें। हम साधारण तरीके से कह सकते हैं इन तीनों को छोड़ करके आपका जीवन है कहां? वेयर इज योर लाइफ? इन तीनों को माइनस कर दीजिए, आप कहां हैं? आपके पास करेंसी हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, लेकिन संपत्ति के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन में कहा कि जल जंगल जमीन, यानी जिसको हम कहेंगे संपदा। संपत्ति और संपदा में बहुत अंतर है। संपदा ब्रह्मांड का संतुलन बना करके रहता है, और संपत्ति खुद को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। बहुत सारे चीजों में आपको ऐसा महसूस होगा। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने जिन बातों को ध्यान में रख करके हमें सींचा है, आज उनके पूर्व संध्या कहेंगे, क्योंकि 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव दिवस है। उस गौरव दिवस में हम सब देशवासी सम्मिलित होकर के राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिवस मनाएंगे, लेकिन उसके पहले जो ये इनोवेटिव आइडिया के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा है, मुझे खुशी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है और वो लगातार लगे रहते हैं। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी विनीता श्रीवास्तव कोऑर्डिनेट करती हैं। यह जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के आधार पर जो एक समस्या जिसकी चर्चा किया, सिकल्स के, थैलेसेमिया के, एनीमिया के, ट्राइबल एरिया में एक पैच है जहां पर यह प्रॉब्लम है, इस पर हम मिलकर के काम कर रहे हैं। एजुकेशन में गैप्स एनालिसिस करते हुए हमारा काम चल रहा है, और मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसका श्रेय, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पहला कॉन्क्लेव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी और ट्राइबल अफेयर्स, एंड जिसका थीम है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें, इनॉग्रल सेशन का संकल्प कि आप इस पर चर्चा को कंटिन्यू करिए, और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि आप किसी प्रोग्राम में जाइए
उस प्रोग्राम के पूरे सब्जेक्ट को समझ करके आउटकम क्या आ रहा है इस पर फॉलो अप लगातार करते रहिए। ऐसे नहीं कि मैं आया, आई केम टू द प्रोग्राम एंड लंबा लॉन्ग स्पीच हमने दिया, तालियां खूब बजी, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, ये अपने जगह में है। हम इस आज के बुनियाद पर भविष्य का बिल्डिंग कैसे निर्माण करेंगे, ये हमारी चुनौती है और संकल्प यह होना चाहिए हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। With this few words I conclude my speech and thank you very much all of you. जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आप सबको जोहार। Thank you, sir, for your valuable and thought-provoking address. May I now request Professor S.K. Majumdar, convener of this conclave from IIT Guwahati, to felicitate Ms. Kimnei Chanseng, Director, ASTEC. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are now moving towards the conclusion of this beautiful inaugural event, which could not have been possible without the help and support of several stakeholders, both at individual and institutional level, including those behind the scenes. May I now request Ms. Kimnei Chanseng, Director, Assam Science, Technology and Environment Council, Guwahati, to please propose the vote of thanks. Namaskar. Good afternoon, everyone. Honorable Arjun Mundaji, Union Minister of Tribal Affairs, Government of India. Honorable Union Minister of State, Science and Technology and Art Sciences, Dr. Jitendra Singh. Respected Director, IIT Guwahati, Professor T.G. Sitharam, Dr. Debapriya Datta, Advisor and Scientist G, respected Directors, IISST and Nectar, Honorable Vice Chancellors of various universities, our most valued guests, resource persons, officers, exhibitors, students, and ladies and gentlemen. I deemed it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this inaugural ceremony of this august conclave on science and technology empowerment of tribal community. Everyone can see that I am also an empowered tribal woman. So I feel very proud to get this chance to offer a vote of thanks in the first national conclave on empowerment, science and technology empowerment of the tribal community. On behalf of all the organizers, I offer my heartiest thanks to our chief guest, our Honorable Union Minister of Tribal Affairs, who had blessed us with his presence. Sir, your presence has instilled the force amongst all of us to realize the goal of
science and technology empowerment of tribal community. So despite your busy schedule, you have carved out a time to grace this occasion, and we are really, really so grateful and happy, and we really loved you, sir, for being with us today. And sir, I am sure, we are all sure, that under your leadership and your genuine love for the community, for us, especially for the tribal community, you will bring a radical change and usher a scientific revolution with the Science and Technology Department, Government of India. My heartfelt gratitude to our Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, for his august presence, his guidance, support, and vision on percolation of scientific temperaments in each and every section of our country, and especially on S&T empowerment of tribal community, will go a long way in all overall development of the nation. We miss your physical presence, sir, but we are glad that we could see you online today. I, on behalf of all the supporting institutions, convey our thanks to you, sir, for choosing Assam to host this memorable event. My sincere thanks to Professor T.G. Sitaram, Director IIT Guwahati, for his extensive support in every possible way for making this conclave a grand success. Without the support of IIT Guwahati, it would have really been hard for organizing such a mega event within a very short time. So thank you so much. I extend my deep sense of gratitude to Dr. Debapriya Datta, advisor and scientist Ji, for his faith on us, I should say especially STEC, a very small organization, to organize this event. And thank you, sir, for guiding us, and we need you to constantly guide us till the end of this program. And also, I thank our honorable directors and also the vice chancellors, all the resource persons, officers of the various technology, science and technology councils who have come here from across the country for attending this conclave. And I extend my heartiest thanks to all the exhibitors and distinguished invitees who had accepted our invitation and present in this event. I thank the electronic media and print media personnel for showing interest in covering the event. And I warmly thanks and welcome the students who are here with us. And also, last but not the least, I thank all the noble souls, the known and the unknown hands, who has worked behind the screen with full dedication and honesty to make this inaugural program a grand success. I thank again, once again, to all of you. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, Madam. May I now request the Honorable Ministers and the dignitaries on the dais to please proceed for inauguration of the exhibition in the ground outside this auditorium. We request the audience to kindly remain seated for some time. I repeat, we request the audience to kindly remain seated for some time. Thank you all for your participation. Good day. Namaskar.